हेलो सब लोग, वेलकम टू हेल्थ इज वेल्थ मंडे मॉर्निंग. And with me is Dr. Jag Kalra. As you know, she has so many years experience. And I met so many people yesterday. Everybody was talking about her. She's so famous. Doctor. Thank you, And Jyoti. I want to, before we start, I want to wish your grandson Summer a very happy birthday. We are so happy. Thank you. Yes. टर्न yes, 7. सो हेल्थ इज वेल्थ में जो भी सब लोग देख रहे हैं सब ब्लेसिंग देंगे अपनी. और डॉक्टर जग कालरा जी डेलस में है पर डेडिकेटेड है एंड शी इज ऑनलाइन विद अस. एंड डॉक्टर कालरा जी, जग जी, माय फ्रेंड, आई जस्ट वांट टू say thanks for everything. And you are concerned about community's eye problems. And last week we had Dr. Prachi Dua, ophthalmologist. She talked about cataract surgery. And now today Dr. Jag Kalra is going to talk about eye care, which is very important. आंखें हैं तो सब कुछ है, इसलिए आंखों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. प्लीज डॉक्टर जग कालरा जी. Thank you, Jyoti ji. We are all dedicated. That's why we are here. And Jyoti ji is right. I am in Dallas, and we thought we will do some common eye problems. जैसे ज्योति जी ने बोला, जो आंखें हैं तो जहान है. दो आंखों से देखते हैं. Thank God we have two eyes, and both eyes work together to give us a good vision. आंखों के अंदर से झांकते हैं अखियों के झरोखे से. अखियां इज अ झरोखा ज्योति जी. जैसे में झांकते हैं ना तो अंदर की बॉडी का पूरा पता लग जाता है. हाउ इज द हार्ट वर्किंग, हाउ द सर्कुलेशन वर्किंग, how are the diabetes working, is it control or not, how is the blood pressure going on. So the eyes really tell you a lot of things about the health of our body. So before I talk about those problems which are common, we were so lucky to have last week Prachi Dua, Dr. Dua, who talked about cataract. That's one of the most important problem as we age. But before we age, we have other common problems. And if we learn to deal with them a little bit, maybe we are already doing it. But if we learn to prevent them a little bit, maybe we won't have serious problem. So हम आई के बारे में, अगर ये आई आपको दिखाई देती है, ओके, ये देखिए ज्योति, ये हमारी आई है. वाह जी वाह, सब इसके लाल लाल आई और चारों तरफ सब लिखा हुआ है कौन सी क्या चीज है आई में. Yes, so I thought I'll just show you. This is called eyeball. ये सामने से जैसे आप देखो हमारी आंखें, ज्योति जी की आंखों की तरफ देखिए. सब ऊपर में क्या जो फर्स्ट लेयर है, इट्स कॉल्ड कॉर्निया. वो ऐसे करके कर्वेचर की होती है कॉर्निया. एंड ऑन द साइड ऑफ कॉर्निया इज कॉल्ड कंजंक्टिवा, विच कंजंक्टिवा से ही आपको मालूम है कंजंक्टिवाइटिस होती है और इट्स रेड आई. एंड बिहाइंड द कॉर्निया इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड आइरिस. आइरिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आइरिस गिव्स द कलर टू आवर आई. किसी की ग्रीन आईज होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की ब्लैक, ब्राउन. दैट इज जेनेटिक डिसाइड्स दैट. बट आजकल तो देखिए आंखें चेंज कर सकते हैं कॉन्टेक्ट लेंस लगा. सब लोगों को ग्रीन आई, ब्लू आईज, ब्राउन आईज चाहिए. But Jagji, I like black eyes. हम लोग Indian eyes are the best. Indian or dark brown. We all have, most of us have dark brown eyes. So what I'm saying is the iris gives the color to the eyes, and the color can be changed these days. So don't be surprised if somebody said, "Oh, I'm born with the blue eyes." Really? Okay, take your lenses off. right in the center of iris is your center में होता है, उसको कहते हैं pupil. Pupil is a real window to inside of our eyes. This is like a hole in the iris, and that's the hole through that is, if you remember, ophthalmoscope होते थे, डॉक्टर के पास जाते हैं ophthalmoscope. आजकल तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, they don't come close to you, especially since COVID and everything. The doctors don't come like this. Otherwise तो हम लोगों ने सीखा ऐसे ऐसे बिल्कुल आंख के अंदर मुंह से मुंह मिला के आंख के अंदर वो प्यूपल के अंदर से झांकते थे हम लोग. वो सब चले गए. बड़ी बड़ी मशीनें हैं, दूर से ही डॉक्टर आपको ऐसे करते हैं और check कर लेते हैं. Very rarely they come very close to your eye. But if you really want to look inside the eyeball or पीछे में optic nerve, you have to go through that window called pupil. So they have now new machines to look in the retina. They make you sit there. I don't know if you have gone for eye checkup, and then they don't need to come very close to you.
But not everybody has that. So if they come close to you, don't worry, they are looking in your eyes, not your face or something. So some of the common problems are that I mentioned is red eye. Red eye. Red eye could be very simple. It doesn't mean anything. It doesn't affect your vision because it's only kind of in the conjunctiva, which is the very thin layer outside your eye and not in front of the center where cornea is. So conjunctiva, red eye ho jati hai. If you just sneeze sometimes very loudly, that can give you red eye because all the small capillaries break. And the other common cause is allergies. Allergies, itchy eyes, red ho jati hain. So it's not dangerous, but it's bothersome. So we have to take care of that. A swimming pool, in the summer, we go in the swimming pool, there's chlorine. It can cause red eyes and itchy eyes. So again, you come out and you put some medicine. So these are simple, benign. Even Jagji, I just want to add, I Mhm. take shower and Mhm. I get red eyes. Yes, some people do. Half Because an of hour. Everybody say, what happened to your eyes? hot water, maybe steam gets to you, right? Yeah. So it's not bad. You just come out. Don't rub your eye too much because if you rub, it can make it worse. So try if you have some Visine at home or something with the red eye, will soothing or artificial tears. Or dry eyes are very important. A lot of people have dry eyes that can be itchy also and can become red. Then the other important cause is sometimes you just wake up and the eyes are sticky and they're whitish discharge, the eye is very red, and that could be infection, especially in the children when they come from school, the like for very young first grader or kindergarten, they don't know, they touch each other, rub their eyes. So that's an infection. If there's a discharge in the eye, especially mucus, that needs to be taken care. Depends on, most common is virus, so then they don't give you antibiotic, but they give you soothing drops. But if it is bacterial, they can do quick cultures and then they can give you antibiotics. So that is on the surface called conjunctivitis. Then we can have injury to the eye. The injury can affect cornea. Cornea is a layer that is right in front where we see. If I block this, I'm blocking my cornea. So उसके अगर if irritation हो जाए, it's called corneal laceration or ulcer. That you will know right away. You can't see, very blurry, and this is pain it causes. So then you have to go to the urgent care, and that is also not very dangerous if taken care of because it's a superficial, and they can do some medicine and it can heal. And then but inside, if iris get infected, it's called iritis. Cornea को भी infection होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती है because it's very very simple layer. Iris can get infected, especially if you get injured. तो अगर किसी को चलते चलते किसी ने ऐसे करके मारा जोर से, you can get an injury. और आप कहीं गिर गए, आंख के ऊपर लग गई, वैसे तो हम प्रोटेक्ट करते हैं, we always put our hands there and protect our face, but it can happen. So if that happens, that needs to be taken care right away. So iritis हो जाता है. Iris के बीच में और पीपल के पीछे में होता लेंस, जिसके बारे में हमने बहुत बातें करी. वो ऐसे करके सस्पेंड होता है, जैसे रस्सियों से होता है ना, बीच में लेंस दोनों तरफ से फाइबर होता है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ द लेंस इज सस्पेंडेड बिहाइंड द प्यूपिल. तो लेंस तो आपको पता लग गया, कैटरैक्ट हो जाता है मोस्ट कॉमन विद द एज. बट समटाइम्स द यंगर पीपल गेट कैटरैक्ट. इट कुड बी जेनेटिक, इट कुड बी फ्रॉम स्टीरॉइड्स यूज. तो वो तो आपको आंख के सामने धुंधला दिखाई देगा. So sometimes kids complain and the parents ignore. Don't ignore. I'm telling the parents or grandparents, don't ignore when the kid all of a sudden says, "Oh, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मजाक मत करो, ऐसे नहीं करो." So it's just pay attention. So going from the front to the back. तो कैटरैक्ट के बाद में तो हमने पूरी बात कर ली. लेंस के बाद में, उसके बाद में लेंस के पीछे में, और इवन लेंस से पहले एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर. वो जो बड़ा पतला सा पानी जैसे होता है. Sometimes the injury gets drained and we get very dry eyes because there's no fluid to lubricate the eye. तो उसका भी injury से ही होता है तकरीबन, very rarely from infection. Then you will know it's a red eye and sticky eyes. तो लेंस के पीछे में जो होता है, that's called vitreous humor, which is very thick and that can have floaters. तो floater के बारे में थोड़ी सी बात करी थी. Floaters are parts of the retina that detach
एंड हमारी आंख के आगे पीछे नाचते ही बोलूंगी. If there are one or two, nothing to worry, it can happen to anybody. आपको कोई काला काला आंख के सामने कभी नजर आए, so eyes get used to it. But if there are too many or all of a sudden सारी आंखों के सामने छोटे छोटे black है, that's a serious problem. So if there are too many floaters, they need to be taken care. But if one or two, you still go for a checkup, but it's not to worry. तो उसके बाद में जो पीछे जो important है, that's called retina. Retina is where we see. The light goes into the eye through the lens into the retina, and in the center of retina is called optic nerve. जो nerve होती है ना, that carries the fibers to the brain, and the brain sends the message back. ये देख लो, वो देख लो, कुछ भी कर लो. तो उस optic nerve is white like a circle, and that's what the doctors check when they're looking at your nerve. कि nerve की margin बिल्कुल ठीक है, nerves में कोई crinkle तो नहीं आ रहा, nerves के चारों तरफ जो रेटिना में उसमें blood vessel में are they good or they are fat. The fat blood vessel होते हैं, that means that too much fluid in your body. Hypertension, diabetes, उनसे वो cells break हो जाते हैं, so they can tell that your diabetes is getting bad or your hypertension is bad. उसको बोलते हैं diabetic retinopathy or hypertensive. So eyes can tell a lot. These are problems with the age, but sometimes the young children can have that too, and right away with the vision is bad. तो उसके बाद में बड़ा important जो problem होती है, it's called glaucoma. Glaucoma could be symptomless, no symptom, and you can get blind. It's one of the most common cause of blindness without symptoms as you age. So that's why we need to take care. Most of the time, the glaucoma comes after age 40, 50, but it can come sooner if it's in your genes from the hereditary or injury or diabetes or something like that. So that's why अभी हम चेकअप की बात करेंगे. I'm just going through these common things. The glaucoma is many types, but the most common glaucoma is called no tension glaucoma. Means there is no tension, even if the doctor says अरे ये तो आपका प्रेशर बढ़ा भी नहीं हुआ, लेकिन उनको देखने से पता लग जाता है कि ये हमारा रेटिना खराब हो रहा है. So they will tell you have a glaucoma changes. Then there is a narrow angle, and then there is a wide angle. ये फ्लूइड कैसे ड्रेन हो रहा है, डिपेंड ऑन द फ्लूइड ड्रेनेज, वो प्रेशर आई का चेंज होता रहता है. तो उसके बाद में जो एक सीरियस है, इट्स कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस. आई डोंट नो इफ यू हर्ड दैट सम पीपल हैव नाइट ब्लाइंडनेस. एंड उसके अंदर में क्या होता है कि जो रेटिना की लेयर है वो प्रॉपरली लाइट को वापस नहीं भेजती है, especially during night time, because there is no sun to help. So that night blindness can sometimes people cannot drive. So that's a serious problem. और कई लोगों को कलर ब्लाइंडनेस सुना हुआ आपने. कई लोगों को स्पेशल पर्पल एंड ब्लू वो कलर दिखाई नहीं देते. रेड एंड ग्रीन तो सबको तकरीबन दिखाई देते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट कलर्स होते हैं समटाइम्स दे कैन सी. सो कलर ब्लाइंड. अरे इतनी आई की डिजीजेस है ना, एम्ब्लायोपिया और पता नहीं हाइपरमेट्रोस. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू कॉमन. तो ये तो हमारी आई की एनाटॉमी हो गई. मैकुलर डिजेनरेशन, ऑप्टिक नर्व के साथ में एक एरिया होता है, उसको मैकुला बोलते हैं. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आई के लिए. अगर वो भी अफेक्ट हो जाता ना तो मैसेज ऑप्टिक नर्व को जाते नहीं है, एंड देन यू कैन बिकम ब्लाइंड, एंड दैट गेट्स अफेक्टेड विद हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज. तो मैकुलर डिजेनरेशन इज आल्सो ए प्रॉब्लम इन सम एडल्ट्स और एल्डरली पीपल. तो वो भी, इसके लिए भी वो डॉक्टर चेक करते हैं कि अगर शुरू हो गया, देन वी कैन डू a little exercise or stop it by putting some vitamins or taking some vitamins, not putting vitamins in the eyes. So that is, ophthalmology disease not covered by the general doctor. तो हम लोग तो जनरल क्विकली बता देते हैं पेशेंट को, ये कर लो, वो कर लो, आई डॉक्टर के पास अभी जाना है, ये कर सकते हैं और जनरल एडवाइस दे सकते हैं. उसके बाद तो उनको ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाना है. नाउ वी हैव रेटिना स्पेशलिस्ट आल्सो. कैटरैक्ट स्पेशलिस्ट भी होते हैं, लेकिन कैटरैक्ट इज अ कॉमन ऑपरेशन, सो मेनी ऑप्थेमोलॉजिस्ट कैन डू दैट. लेकिन रेटिना का ये होता है ना, वो स्पेशलिस्ट होते हैं फॉर मैकुलर डिजेनरेशन, फॉर ऑप्टिक न्यूराइटिस, थिंग्स लाइक दैट दे हैव. सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट कि कैसे अपने आप को आईज को मैनेज करना है. एट अ यंग एज the common things the parents or grandparents notice is called lazy eyes. तो eyes होती है ना, they don't focus for the kids properly.
एक आंख उधर जा रही है, एक आंख इधर जा रही है, because they are not, muscles are not working properly. That's for the children. तो वो adult में भी हो सकती है with the disease, but children it is common, and then they give you correcting glasses, or they teach the kids, correcting glasses in a way that एक आंख दूसरी आंख से alignment हो जाए, so that anybody can notice it. And sometimes when the kids are complaining, मेरी आंख, rubbing बहुत ज़्यादा हो रही है, and you're watching it, so you have to do something and not just take for granted. अभी स्विमिंग पूल से निकल के आया वो, आइस बादल कर so all these things, you quickly look at the eye and they कि कुछ अंदर चला तो नहीं गया. कई बार there I get sometimes छोटे छोटे मस्कीटोज होते हैं ना, छोटे छोटे, वो भी आंख के अंदर चल जाते और हैं. जब कभी आंधी चलती है तो फिर आंखों में आ जाती है, कई बार धूल भी आ जाती है. बिल्कुल आती है तो आंखें बंद करनी पड़ती है, तो वो हम लोग समझते नहीं है ना, लेकिन all these things, small things but need to be important. And then as the children are growing up, you need to check their vision, especially अगर वो बच्चे जो है ना, जो क्लास में ठीक से दिखाई नहीं देता उनको, वो परवाह नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं ठीक से कर रहे हैं, so there may be an eye problem, and not just because they are lazy or something. So the parents have to pay attention and get their eyes checked. And most of the kids, their eye problem is distant vision. इनको दूर का दिखाई नहीं देता, तो उनके लिए correction glasses, it's called myopia. When they are young, you put glasses. As they get older, they don't get better, but they get stabilized भी हो सकते हैं, worse भी हो सकते हैं. Then when they get young, they want to wear contact lenses. So अगर लेंस लगाएंगे तो पेरेंट्स को फिर चिंता रहती है कि वो कई बार अगर बहुत यंग बच्चों को आप कॉन्टैक्ट लेंस देंगे, like 12-13, they may not take it off at night. That can stay there and cause irritation. तो पेरेंट्स का वो भी ख्याल रखना पड़ता है, बच्चों को समझाया दे बहुत रहे हैं, इंजरी होती है कांटेक्ट लेंस से भी, कई बार बहुत इरिटेशन हो जाती है. So the parents have to tell the kids, listen. पर जग जी, बच्चे, छोटे बच्चे आजकल बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं तो आईज प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है. चश्मे छोटे छोटे बच्चों को लगा होता है मेरे को. बिल्कुल आई स्ट्रेन. उनकी क्या बात करें, अपनी बात टीवी करें. देखते हैं, टीवी बहुत देखते हैं यहाँ. I was going to come to this eye problem. Since we have WhatsApp and Facebook and computers, क्या करते हैं हम लोग, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे आंखें करते हैं. माय गॉड, आप सुबह सुबह अगर देखना शुरू कर दो व्हाट्सएप, इतने मैसेज होते हैं, आंखें ऐसे करनी पड़ती हैं कई बार. नहीं तो उसका कोई उपाय है कि कोई ग्लासेस पहन लो या कंप्यूटर पे आप वो लगा लो कोई स्क्रीन जैसा कि आंखों में ज्यादा रोशनी ना आए, राइट? Yes, they have this blue glasses nowadays. आपने देखा होगा कई बच्चों ने ब्लू ग्लासेस लगाए हुए हैं, उससे जो लाइट आती है कंप्यूटर से कम जाती है, लेकिन द ओनली थिंग इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ द टाइम, कि आप ज्यादा देर मत कंप्यूटर पे रुको. अगर रुको तो जैसे नेक में स्ट्रेस हो जाता है, थोड़ा स्ट्रेच करो, आईज को रेस्ट दो. पानी के छींटे भी समटाइम्स हेल्प्स अ 2-3 बार कहते हैं मुंह धोना चाहिए आंखों का दिन में, राइट? helps a lot. It does refresh your eyes. So all these things we have to do more, because we are doing all the modern technology. So modern technology with the benefits also have side effects. So with that side effects, you must make sure that you learn the proper way. Proper way नहीं करोगे तो you can hurt your eyes, and you can not become blind completely, but it's not quality of life. तो उसके बाद में हम जो भी आई की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे एज के साथ रीडिंग ग्लासेस तो लगेंगे ही लगेंगे, बिकॉज द लेंस इज नॉट फोकसिंग प्रॉपरली. यूजुअली कितने साल में आपको चश्मे की जरूरत होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम 50 के बाद, राइट? most of the time they say after 50, but some people get it at 40 vision. Or the way I found out is I couldn't write the checks properly. मैंने कहा ये मैं गलत ना लिख दूं. Then I knew I have to wear, especially writing a check, you put your eyeglasses or get that. So it's not a big deal. If his vanity doesn't come in the way, then you the eyeglasses. And so जी, I like वो glasses जो कि बाहर पे कलर चेंज हो जाता है और सन बन जाते हैं, so that is good. That's very good. That is So you very don't have to carry 2 glasses. Yes. Yeah, you just मेरे को जिस दिन glasses की जरूरत पड़ेगी, I am going to get those one. Yeah, so the more money you put, the more fancy you can get. Yeah. The fancier the glasses. The sunglasses, kitni UV light hai, that's you need to know when you go in the sun.
सन में प्रोटेक्ट करना अपने आप को पर बहुत जरूरी जग जी, ये यूएवी तो हर ग्लासेस के ऊपर लिखा होता है 100%, चाहे आप $5 का लो चाहे $100 का लो. I What don't does it believe mean? it. I don't believe it, but वो तो आप आंख में लगा के ही आपको पता लग जाएगा कि is it 100% or is 20% or 0%. So I think the better. Definitely sun को नहीं देखना चाहिए, right? Naked eye से. Correct. Never look up on the sun all the time. So now we will talk about what should we do for a regular checkup. Yes, yes. Till you get your, eyeglasses or reading glasses, once a year is fine. But as soon as you cross 50, because you're going to get the eye changes, you also can have glaucoma. If your history is bad, you can have diabetes, you can have hypertension. Smoking is always bad. So as soon as you age, you have to either go every 6 months or definitely once a year. Now that is the only way to protect your eyes inside, because we cannot look inside. Even if हम और आप ऐसे करके देख सकते हैं, लेकिन हम अंदर नहीं झांक सकते हैं. So ये करने से, and there are certain vitamins, and vitamin A is supposed to be good for the eyes, like carrots. आप अगर खाएं तो अच्छे healthy. And some people used to believe in cod liver oil because it has vitamin A and D. D is also good for you. And there is a vitamin called lutein that is specially made for the eyes. If you have eye problem from the very beginning, they will tell you to take. There's a combination of 2-3 vitamins. So these vitamins can help you. Dieting management can help you. Managing your blood pressure, managing your diabetes is, the common things. And always manage your exercise, because exercise keeps our eyes focused. एक चीज मैं भूल गई, they also check the field of vision. Field of vision की आपकी ऐसे कितनी दूर तक जाती है, that gets affected with glaucoma. Most of us, if you close one eye and the other, we can see all the way up to our ear. आप देखो, अगर छोटी vision होती जा रही है सामने, so you need to be checked up. That's called field of vision. उसके लिए अभी भी वो ऐसे ऐसे उंगली करके आते हैं, आप ऐसे ऐसे करके आते हैं ophthalmologist. I don't think they have any machine for that. They do have a machine, वो आपको बताएंगे कि कोना देख रहा है कि नहीं, पर फिर भी ऐसे ऐसे, it is interesting when they bring the eye. And every time when we go to the ophthalmologist, the first thing is they make you read the chart. तो कई लोग तो चार्ट को याद कर लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड चार्ट होता है, but that's cheating. You are hurting yourself by कि मेरे को चार्ट याद हो गया, मेरी विजन बहुत अच्छी है, 20/20 is the best. But even if you are 20, 25 or 30, you may not need to wear glasses. So sometimes you have glasses both near and distant, तो उसको bifocal glasses बोलते हैं. तो with the modern technology उसको no line glasses, no line, क्यों ऐसे करते हैं, वो लाइन हटा देते हैं, तब किसी को पता नहीं लगता कि आपकी रीडिंग भी है वो भी है. So all these new technologies are very, very good. So we can take care of eyes that way, and we don't have to worry कि हमको future में हम blind होंगे कि नहीं होंगे. Well, that's what we do with the common eye problem. So hopefully it was very helpful. And if you don't have Visine, keep a Visine at home, artificial tears at home. All of us can do some artificial tears at night time to keep it moist. ठीक है, पानी आर्टिफिशियल टीयर्स की क्या बात है, एक थोड़ा सा इमोशनल हो जाए और आंसू ही आंसू आने लगते हैं, कई लोग तो एकदम रो पड़ते हैं. Oh, glycerin. I really don't understand when they show that in the movies. I've never tried to put a glycerin and it will. प्याज से भी आते हैं शायद आंसू, झूठे हाँ? आंसू, प्याज से. Pyaz is very definitely irritant. So when we cut onions, we can wear our glasses, or safety goggles होते हैं ना. People who work with the machines or injury or जो भी ऐसे dust वगैरह से काम करते हैं, they wear safety goggles. All industrial people wear safety goggles. If you want to do something कि ठोका ठाक कुछ करनी है, so keep the safety goggles like we keep gloves at home. You can do that to protect your eyes. Yeah. खाना बनाते हुए स्टीम कभी आंख में चली जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. Wear the safety, any glasses too. It helps. You're definitely right. प्याज से तो oh my god, but I like it. मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ी सी इरिटेशन हो, पता लगता है आईज काम कर रही है अच्छे.
Some people are so emotional, they can just cry. उनकी आंखों में आंसू ही भरे रहते हैं. So सबका अपना I don't know कि छोटे real छोटे answer बच्चे कई बार ऐसे जोर जोर से रोते हैं, इतने बड़े बड़े आंसू बच्चों गिरते को जाते हैं, गिरते. मेरे को बड़ा दुख होता है, वेस्ट कर रहे हैं आंसू. वो उनका एक भी आंसू में झूठ मूठ रोते हैं ना, आपने देखा होगा उनके आंसू नहीं निकलते हैं, झूठ मूठ जाते हैं ये, उसके बाद देयर फाइन. आई इट हैपेंस ऑल द टाइम, आई सी इट हियर. जोर जोर से पर रोते जग जी, हमारे इंडिया में भी जब आई वाज आल्सो ग्रोइंग अप, 19 इयर्स आई लिव्ड इन इंडिया, जब तक प्रॉब्लम ना आई डॉक्टर के पास कोई नहीं जाता है. यहाँ पर आपने बोला साल में एक बार तो जाना चाहिए, राइट? इंडिया में नहीं जाते हैं. इंडिया में पता है क्या, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं एफर्ट करते एवरीबॉडी के एक साल में जाओ, अनलेस यू हैव अ बिल्कुल प्रॉब्लम. बट आई थिंक जाना चाहिए, क्योंकि आईज बिल्कुल की भी कितनी बीमारियां हैं, राइट? बहुत. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू गो वंस अ ईयर टू एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट. और पता क्या होता है, लोग दो क्लासेस करने के लिए ये ऑप्टिकल स्टोर में चले जाते हैं, बट दैट्स जस्ट चेक्स योर विजन, दे डोंट लुक एट योर हाँ, बैक ऑफ रियल डॉक्टर आई. के पास जाना चाहिए, आई डॉक्टर के पास. स्पेशली इफ यू हैव डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, तब तो जरूर ही जाना चाहिए. दैट्स व्हाट जग जी, वी एक क्वेश्चन मैं आर. आपसे पूछूंगी, किसी को रेड आई ऐसी हो जाती है, 1-2 दिन रहती है, तो उसका क्या हो सकता है, उसका रीजन रेड आई का? कुछ को ये तो एक बोला ना, स्ट्रेस से भी हो जाता है. स्नीजिंग से हो जाती है, स्ट्रेस से हो जाती है. सम पीपल आर टेकिंग एंटीकोआगुलेंट टू प्रोटेक्ट द क्लॉट, तो उससे थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है. वो जो होती है ना, सुपरफिशियल होती है, गेट्स अब्सॉर्ब्ड इन 3-4 डेज. देखने में बुरी लगती है, but it's not pretty to look at, but it's not dangerous because it's not in front of the vision. Yeah, that's what's called pink eyes. So if you still should look into it कि कोई infection तो नहीं है, लेकिन just pink eyes is sneezing और जोर से constipation कईयों को होती है, तो भी हो सकती है, because the blood vessels very thin capillaries, they can break in the eye. तो देखिए कितना अच्छा रहा हमारा. We did a very good job. I बहुत hope अच्छा people जग जी. और मैं कहूंगी, आईज इज योर सच अ डेलिकेट पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड in those. मोस्ट ब्यूटीफुल. आईज से ही सब कुछ होता है. लोग Yeah. कहते हैं ना, Oh, प्यार भी हुआ चुपके से, yeah. वो आईज से होता है. बिल्कुल आईज बिल्कुल. इज वेरी गुड थिंग, आई मीन Yes. बहुत ध्यान रखना चाहिए आईज का. मुझे पता है क्या ख्याल है उससे. देखिए ड्यूरिंग कोविड टाइम वी वर ऑल वेयरिंग मास्क, है ना, तो आंखों से पता लगता है ये बंदा खुश है या नाराज है. ऐसे करके बैठोगे तो क्या, इधर आईज आर स्माइलिंग, you are smiling, you're happy. एक्सप्रेस. I give the attitude of person, so not just good for the health, but it's attitude adjusting too. तो सबको आंखें से स्माइल करेंगे, अपने आप आ जाएगी स्माइल. then you be happy, you're like you are smiling happy. इतने काम करते हो, कभी कहीं जा रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं, तो but still try to keep eyes smiling and the face smiling. स्ट्रेस तो आते रहेंगे, अब स्ट्रेस को क्या करेंगे, स्ट्रेस के साथ तो हमको आदत डाल अगर लेनी आपको चाहिए. स्ट्रेस आ भी रहा है, तो सबसे पहले इट विल अफेक्ट योर आईज ग्रोथ भी. यू आर हैप्पी, आईज से ही सब कुछ पता लग जाता उनको लोगों को बताओ रिंकल भी हो जाएंगे अगर आप स्ट्रेस लोगे तो. है. रिंकल यहाँ पे माथे में आते हैं सारे. वन डे वी गोना टॉक अबाउट स्किन Oh yes, wrinkles. wrinkles. Yes, right. Yes. तो we'll get somebody It will help who. lots of people, yeah. Yes, 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 yeah. तो अगर आप बहुत हंसेंगे तो यहाँ पे रिंकल आ जाएंगे, इसलिए हंसो भी पर ज्यादा. It's so interesting. Yeah, that is very, very, So you know, जगजी, वेरी गुड. आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया आईज का. फिर हम करते रहा करेंगे आईज का सेशन, बहुत जरूरी है, eyes is very important. We can take I one thing. think it's a very important part of your body, eyes. Yeah. You don't have your eyesight, you can't see the world, you Yes. cannot see the flowers, you can't see the butterflies. आधी लाइफ जब आप किसी सिंगर को सुनते हैं, there are so many singers who have such good voice, but they have no eyes. They get used to it, but हमको उनके ऊपर कितना तरस आता है ना, कि उनको पता ही नहीं कि इतना सुंदर देख भी नहीं सकते हैं. I know. Yeah. Yeah, eyes का Thanks God कि हम देख सकते हैं, कितने लोग देख हाँ भी नहीं हाँ. सकते. मैं तो And with यही good थैंक्स eyes. करती हूँ भगवान को, Yes, yes, thank गॉड God. को. Yeah. Thank तो God for जग two जी, eyes. हमारा टाइम हो गया. हाँ और जी, कमाल हो गया. एंड आई अरे, ऑल्सो वांट यू टू सिंग. पहले मैं आपसे बोलूंगी, कोई आई पे आप भी कोई गाना हो जाए. बिल्कुल. और समर का अगेन बर्थडे की बहुत बहुत बधाई. आई वांट टू सिंग 2 lines फॉर हिम. Sure, sure. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, Amar, हैप्पी we are singing to you. बर्थडे डियर समर,
Happy birthday to you. Very So nice. today is his birthday, right? No, birthday was day before. Saturday. Okay. हाँ, All तो right. मैं So खुश anyway, he's 7 years old और Yes. आपका बहुत चहेता है Yes, और आप बिल्कुल दोनों का प्यार बना रहे, बॉन्डिंग Yeah. बहुत अच्छी है, देख के अच्छा लगता है। कल से ही रोना शुरू हो गया. You are leaving, you are leaving, you are leaving. One more day. One more day. Let's enjoy Yeah. one more day. तो ऐसे ही है. Yeah, so हमारी आंखों के ऊपर तो कितने गाने हैं ज्योति जी. गाइए आप या मैं गा दूं पहले एक? आपका जरूर. चलो मेरे को एकदम अभी याद आ गया आपसे बात करते करते आंखों Yes. के ऊपर बहुत अच्छा गाना है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये उठे शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या क्या। अरे वाह, क्या रोमांटिक गाना. आंखों अब के आप ऊपर सुनाइए कोई आँखों के ऊपर। पुराना गाना सुनिए. आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया. आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया. आंखों ही आंखों में. देवानंद का बहुत बढ़िया गाना है ना. बहुत अच्छा जग जी, बहुत अच्छा। हमने आई का हाउ टू टेक केयर ऑफ आईज, आई के बारे में डिस्कस भी किया और आपको गाने भी सुना दिए। और आप लोगों को अगर कोई गाना और आई का आता है तो आप इस प्रोग्राम को देख के लिखिए। और बहुत एनी क्वेश्चन यू हैव विद डॉक्टर जग कालरा, यू कैन जस्ट राइट एंड शी विल रिप्लाई यू विद इन 1 day, डेफिनेटली 1 or 2 days. You never know, maybe in 1 hour. anytime we'll be there. And if anybody needs any help, they can call, they can comment, they can suggest any other topic. And then next time we'll come with another wonderful topic. Or बहुत, health is so important that we can, take care of any organ properly and have a good quality of life. है ना? जीते तो सभी हैं, लेकिन क्वालिटी के साथ जीना तो और ही बात है ना? चलिए ज्योति जी. Okay, thank you everybody. See you Thank you. next Monday at 12:30. Namaskar. नमस्ते. Sat Sri Akal, Adab. Mhm. Bye.